Ashutosh has had, I think, a really amazing life. You were born in Banaras. In Mirzapur. Born in Banaras. Born in Banaras. You forgot where you're born. Brought up in Mirzapur. Yeah, because I relate to and associate with Mirzapur. I spent almost 13 years there. You're son of an income tax official, and he must have been honest because you lived in one room with 6 members of the family, an outside toilet, didn't see electricity till the age of class 4. Class 4. And then you went through your high school, and your father was the first graduate from Faizabad. In my family and in my village. And you studied, I mean, it's like a Hindi movie, you studied with a lantern. Yeah, I did. Then you went to JNU through where you were going to attend. That's the beautiful accident which happened with me. Yeah. Because I remember I was there in Lucknow and I was just thinking about that I should give an exam. I should sit for the IS examinations because that is something which is very, very big in a small city. And I was just flipping through the newspapers and suddenly I saw an advertisement at Jawaharlal Nehru University. I had never heard Jawaharlal Nehru University. So the minute I saw there is an MA courses in international politics and political science, and there is a hostel accommodation. So I thought, let me try this. And then you connected with Pushpesh Pant and Mrinal Pandey. Pushpesh ji first. Achha, so what happened? Pushpesh ji was my professor there. And I had opted in MA SIS, it is School of International Studies. I opted for a subject which was called Introduction to Diplomacy. And he was a teacher there. He used to teach that subject. Diplomacy meaning in international relations or personal relations? No, international relations. Because in personal relations, it hasn't had any effect on you. Because you have lost your cool many times that I have seen. Still You're not diplomatic. No, I'm not diplomatic. You flip it. Yes, certainly. So how did you end up in Saptahik Hindustan? I thought that I कुछ लिख सकता हूँ. So I started writing, and I heard that Dr. Pushpesh Pant has good contacts in journalistic circle because he used to write. He used to write with all kinds of newspapers. So since he being my professor, I went to him and I said कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ. हाँ ठीक है लिखो. So for 6 months, almost every day I used to go to him, discuss topic, go to the library, consult books. Was it published? No, so for 6 months, कुछ published नहीं हुआ. I think young people should hear and remember this, that it's not easy. एक दिन suddenly I got a frenetic call from Dr. Pant and he said कि Mrinal is looking for you, and I had promised him something and I couldn't deliver. मैंने कहा सर बताइए. बोले वो आतंकवाद पे एक राइटअप कवर स्टोरी प्लान कर रही हैं. व्हाई डोंट यू राइट समथिंग ऑन आतंकवाद. मैंने कहा यार तुम चलो मौका मिल रहा है लिख देते हैं. नेक्स्ट वीक इट वाज आई वाज जस्ट वो साप्ताहिक हिंदुस्तान के एक विज्ञापन आता था अखबारों के अंदर, छोटा सा विज्ञापन था, आतंकवाद कब क्यों और कैसे. एंड आई जस्ट लुक्ड एट एंड सेड आशुतोष का राइटअप आतंकवाद कब क्यों और कैसे. आई जस्ट जंप्ड. यार ये जिंदगी का पहला ही ले कवर स्टोरी हो गया. सो दैट वाज द बिगिनिंग. So how did SP find you? We talk about SP Singh from Aaj Tak. मैंने अपना बायोडाटा बनाया था and I had gone to almost every organization, be it Times of India, Hindustan Times, Navbharat Times, almost everybody rejected. Nobody gave me a job, and for 6 months I was very, very tense, very, very frustrated. And suddenly somehow Mrinal ji realized that he's breaking down. So one day she called me and said कि यार वो माला एक चैनल निकाल रही हैं, तुम जाना चाहोगे. वहाँ जाके मैंने उनको अपना बायोडाटा दिया. उन्होंने मेरी तरफ देखा. And Mala is very frightening, intimidating. So she looked at me, how much you want? मैंने बहुत जोड़ घटाना करके मैंने कहा कि 7,000. She looked at me and said, okay, 9,000 will be okay. I jumped कि मैं तो 7,000 मांग रहा हूँ, ये मुझे 9,000 रुपए दे रही है. मैंने कहा इमीडिएटली. सो इमीडिएटली मैंने उनका ऑफर लेटर लिया और उसके बाद I was there for good 9-10 months, and suddenly I got a call कि शैलेश जी, you remember शैलेश जी? Yes. So BITV में थे. उन्होंने कहा यार SP तुमको याद कर रहे थे. मैंने कहा सर SP मुझे क्यों याद करेंगे, अभी 1.5 साल पहले तो मैं उनके पास नौकरी मांगने गया था और उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी थी. बोले नहीं अब वो तुम्हें नौकरी देंगे, तुम उनसे बात कर लो. मैंने कहा सर आप कहते हैं तो चलो बात कर लेता हूँ मैं उनसे. तो मैंने फिर SP को फ़ोन किया. तो SP ने कहा ठीक है तुमसे मिलते हैं. तो कनाट प्लेस में जो कॉफ़ी हाउस था, पुराना कॉफ़ी हाउस, पुराने इनर सर्कल में कॉफ़ी हाउस था, वहाँ पे मैं मिलने गया. मेरे पास मोटरसाइकिल थी उस वक्त, और मैं मोटरसाइकिल जब BITV दफ्तर से बाहर निकला तो बहुत अच्छी खासी बारिश होने लगी. तो मैं बारिश में भीगते गया, एंड कॉफ़ी हाउस के बाहर में खड़ा हुआ था. आई वाज कंप्लीटली ड्रेंच्ड. SP was coming walking and he said कि
आशुतोष? मैंने कहा यस, कम इन। यार तुम तो भीग गए पूरी तरीके। हाँ सर ठंड लग रही है। बोला कॉफ़ी पियोगे? मैंने कहा हाँ कॉफ़ी पीऊँगा। बोला यार तुमको मैं पहचानता हूँ, पहले आए थे, तुमसे कभी मिला हूँ मैं? मैंने कहा हाँ सर मैं 1.5 साल पहले आपसे पास गया था और आपसे नौकरी मांगी थी और आपने मुझे नौकरी नहीं दी थी। बोले यार अब तो दे रहा हूँ ना नौकरी, अब तो खुश हो जाओ तुम। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी जो पुष्पेश जी ने भी मुझे बताई थी, यार देखो ये अरुण पुरी इज़ मोर सॉलिड देन अशोक अडवाणी, दैट फर्स्ट थिंग। सेकेंडली वो इंडिया टुडे उनका मैगजीन है, तो यू विल नेवर गेट अ कॉम्बिनेशन लाइक अरुण पुरी एंड SP सिंह। दैट वन word stuck me. You know, Arun always used to say that everyone's replaceable, but I would say that there's no one who's replaced SP. Certainly. And I remember when I was working in the beginning with him on Aaj Tak, and I did not know how to deal with Hindi-speaking journalists because I would get upset about a story badly done, and then I'd ask, "Where's that journalist?" And they'd say, "वो तो आपने झाड़ा." तो I said, "So?" तो घर बैठ गया, वो तो 1 हफ्ता मुझ जाएगा, गुस्सा पापा। But with the English, but आपका टेम्पर भी तो बहुत भयानक था। सच्ची मुझे याद नहीं है, पर लोग मुझे बताते हैं, but मुझे याद नहीं है because लोग किससे सुनाते थे कि आज मधु ने उस पर गुस्सा हो गई और कैसे मधु ने कस के उसको। हाँ, बट लोग किया होगा, बट लोग ये भी कहते थे कि जिस आदमी को आज डांट पड़ी है उसको शाम को या कल सुबह चॉकलेट मिलने वाली है। हाँ, कुछ ना कुछ तो होता ही था, कुछ ना कुछ होता था। Because I don't like to keep negative things going, but I'd be surprised कि अब वो गुस्सा हो गया, जब तक वो मधु आप मनाओगे नहीं वो आएगा नहीं। Whereas with the English-speaking journalists, I would get upset, angry like this. You've messed up the story. You didn't ask the question in the interview. क्या लाए हो ये वो? I would scream and yell. And the English-speaking medium में journalists में, they would bounce back within half an hour, and we'd be talking like friends. But I learned that with the Hindi medium journalists, you have to expect at least a 1-week sulk, so they will not come to work.